Hi guys, hi everyone. Today we have with us Swapnil sir. Swapnil sir is a DGM at WeSchool. Sir, आज हम आपसे जानना चाहते हैं phase 1, phase 2 के बारे में because lot of B schools, including your B school as well, have this thing called phase 1 and phase 2. तो Correct. what is this phase 1 versus phase 2? If you ask me as a student, तो मैं तो भैया जब last deadline है ना सर, मुझे तब बताना, मैं तब अप्लाई करना चाहूंगा. तो जितना मैं जो बोलता हूँ भाई, तेरे को जब पता है तेरे को विलिंग कर अप्लाई करा तो चुपचाप करना, तो क्यों लेट कर रहा है. सो व्हाट इज phase 1 versus phase 2, and if I want to choose, which is more benefit for me? So, okay, welcome to the session and thanks Rai for having me. Okay, so phase 1 versus phase 2 is very simple. Every institute, so I can speak for Wellington Institute and probably you can correct me for other institutes. Okay, so for Wellington Institute it's very simple. Like क्या होता है कि CAT का रिजल्ट आ गया है, XAT का आंसर शीट आ गया है. आंसर की जब आएगा तो you will come to know 90% of the times that what kind of percentiles you have. Okay, and then of course the result will come. But there are many students who probably have not done well in these two tests. Many students. So obviously 80% Janta are not done well. 20% of them have done well. Of course, they are going to have more than 80 percentile. So we are worried about that 80 percentile Janta, jiska profile bhi acha ho. So what do I mean by profile is many definitions across. But one of the definitions which we truly believe in is your academics, which is the foundation, which is your base. Okay, so what is your base? Your 10th, 12th and graduation. Okay, so if you have 666, let's say first class throughout, then you will be more likely to do well in at least a CMAT or a ATMA, given a chance going forward. And hence this phase 1 में क्या रखा है हमने, अगर आप कट ऑफ मीट करते हो ऑफ कोर्स तो अप्लाई करोगे, तो हमें कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं. But the other half, where the profile is good, profile means these academics are good, 666, like I repeat for the benefit of students, 60% in 10th, 60% in 12th, and graduation में भी 60% आया है, तो अप्लाई कर सकते हो और आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आएगा. बट इसमें ये निश्चित नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, आप इवेंचुअली आपको कट ऑफ मीट करना है ऑफ द कॉलेज. दिस लग्जरी इज नॉट गोइंग टू बी. And how much is the cut off? 80%. So 75 to 80, 75 to 80 is the cutoff. So ये पर हमने क्या किया है सर कि हम कट ऑफ बाद में अनाउंस करेंगे. पहले कैसे करते थे, अनाउंस कर देते थे. Correct. पहले अभी क्या कर रहे हैं कि हम प्रोफाइल्स देख रहे हैं. ओके, देन अकॉर्डिंगली एंड बॉलपार्क फिगर आई कैन गिव यू 75 to 80 होगा, इसके बीच में ही होगा. ये दिस इज द रेंज 75 to 80. वी विल नॉट गो बिलो दैट. So वो वैसे भी मैंने देखा है जो वी स्कूल का ट्रेंड है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि विलिंग करना, दे वांट टू टेक मोर इंटरव्यूज and then they want to bring more people on board, take more interviews, ताकि उनमें से बेस्ट चूज कर सके. Absolutely. So that is the pool, and I'm sure that many other B schools, and definitely I can't name them. So they offer. If you look at the trends, so many of them have come down from 95 percentile to 80 percentile. But we have been consistent. We have been consistent, and you can see for last 6-7 years. Okay, in the last 8 cycles, of course, and you have been with us throughout. Okay, so वो हर एक cycle में हमने वही रखा है. Okay, we have not. We haven't changed a bit. Okay. Your profile like experience कि 85 percentile है तो भी तुम अच्छे हो, तुम अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है तुम जॉब अच्छी लेके जाओगे. Yes. So we will treat a person with 75 to let's say 98, 99 in equal eyes. Okay. So one more thing I'll tell you. I don't know which all B school will follows this, but the interviewer doesn't know how much marks percentile you have. बिकॉज क्या होता है वो बायस्ड हो जाता है. ये मुझे क्वेश्चन था. राइट प्लीज आप पहले बोल लो फिर बताता हूं मैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट बिकॉज द इंटरव्यूअर इफ ही नोज दैट यू आर 95 then he may be biased in giving you more marks than if he sees a 70, 75, 80. Okay, so interviewer at any point of the time will not know how much percentile you have scored. He is just evaluating you on the form you have filled. Okay, nobody in the, I mean, of course, the admission team in the system knows how much percentile you have scored, but the interviewer definitely doesn't know. Right, okay, because I was going to ask you this question. कि suppose मेरा CMAT, CAT और XAT मैंने 3 एग्जाम दिया है. CAT में मेरा 62 आया, XAT में मेरा 21 आया और CMAT में 92 आ गया.
तो आप अब बोलते हैं, कॉलेजेस बोलते हैं कि तुम सारे स्कोर अप्लाई कर दो, बट आई नॉर्मली से कि तुम जो कम स्कोर है दिखाओ मत, क्योंकि इंटरव्यू ना तुम्हारा सब अच्छा है, लेकिन वो एक जो बेकार होगा पूछेगा तेरा ये 21 क्यों आया, ये 95 में जान दे, वो 21 क्यों आया. सो बट इफ दे डोंट हैव स्कोर इन फ्रंट ऑफ देम, then there's no Yeah, problem. so you are right. So mentally you will feel that you should never upload the score. So see, as a policy, you should apply with all the scores and let them take the best of the score. But you are right. I don't know the process of other colleges. अगर शायद वो लोग all scores दिखाते हैं, then they may be biased. They're biased, right? नहीं, मैं जो तीन चार कॉलेज से बात किया हूँ, दे डोंट शो द स्कोर, दे आल्सो लाइक सेम, दे डोंट शो स्कोर, बट या वी डोंट नो. तो सर आप क्या एडवाइस करोगे, मेरा अगर सपोज कैट में स्कोर कम है तो मैं कैट का स्कोर दिखाऊं कि ना दिखाऊं? आई वुड प्रेफर कि मत दिखाओ, चुपचाप सीमेट में अगर 82 या 85 या 92 आ गया तो चुपचाप सीमेट में बच्चे का स्कोर कैट से ज्यादा ही आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली. Correct. Fine. Correct. So that is why I go back to basics. So that is why the phase one is so beautiful. Okay, at least in Wellinger admission process. And आपको मैं फायदे बताता हूँ, phase one के फायदे भी है. So first is mentally na you will be free. I'll give an example. Before this I was also doing a workshop with the students who have applied to us, and the similar questions were there. So the student had scored less, okay, in CAT, okay, around 62 if I'm not wrong, and XAT में शायद उसके आ सकते हैं अच्छे, because 25 मार्क आने वाले हैं. Okay, so she had calculated. So she was asking me, should I apply by 15th January or should I go for phase 2? Because अभी तक marks नहीं आए हैं मुझे XAT के. Okay, so what I explained is I will not tell you to apply or not to apply. I'll just give you your own scenario. So I'm going to repeat this for you and the audience. So that student, let's suppose she applies, then what happens, and not applies, then what happens? अगर उसने apply किया phase 1 में by 15 January, of course उसका हाँ by this, okay, तो उसका क्या होगा मालूम है? Of course she had better good profile, that means 60 in 10 12 graduation, तो वो एक उसका advantage था, उसको profile based call आएगा. पहली बात, उसका इंटरव्यू फरवरी में हो जाएगा, फरवरी सेकेंड वीक में उसका इंटरव्यू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली बाय दैट टाइम ज़ैट का तो मार्क्स तो आ ही गया होगा, परसेंटाइल भी आ गया होगा, तो शी कैन ऑफ कोर्स अपलोड द मार्क्स, एंड बाय मार्च एडमिशन इज ओवर. ओके, मार्च के रिजल्ट भी आ रहा है ये टाइम, तो पीसफुली वेदर शी वांट्स टू जॉइन और नॉट, दैट इज हर डिसीजन. ओके, बट मार्च में उसको हाथ में रिजल्ट है. ओके, इन दिस प्रोसेस फेज 1. Now let's suppose she doesn't want to apply, okay, or she did not apply, then what happens? तो उसको वेट करना रहेगा till 16th of Feb ताकि phase 2 खुले. स्टार्ट होगा फेब में. ओके, हाँ, स्टार्ट फेब में होगा. 16th of February फॉर्म्स खुलेंगे. अभी 15 जैन को बंद हो गए, 16, एंड ये हमने डाला है, वेबसाइट पे है. करेक्ट. में क्यों नया कुछ मैंने डिस्कवर किया है, वेबसाइट पे है. तो क्या होगा? This very student has to wait for 1 month to have an opportunity to even apply. Imagine, apply करेगा 16 Feb को, okay, the student, and then has to wait till eternity. Eternity क्यों मैं बोल रहा हूँ? CMAT date is not announced, so maybe 3rd week 4th week में होगा, उसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा. तो रिजल्ट के बिना we will not, because second phase is going to be cut off based. So without results, we cannot announce the short list. So the process will go up to May, June. So sir, I have a question. I will leave it to the student whether the person is okay with this or not. Completely. I don't want to manufacture a decision for that. I don't want to take a decision in fact for that person. Correct. Now I have a question. Suppose मेरा इस बार स्कोर कम आया, मेरा फेज 1 में कॉल नहीं आया, तो मेरा फेज 2 में कॉल आ सकता है? Absolutely, sir. आपका एक ही फॉर्म भरना है. आपको एक ही फॉर्म भरना है. अच्छा. ओके, एक ही फॉर्म भरना है. फेज 1 में भरो या फेज 2 में भरो, ये आपका डिसीजन. फेज 1 के फायदे बहुत है, तो इसके लिए मैं सभी को बोल रहा हूँ कि फेज 1 में भरो ना. भरना ही है तो फेज 1 में भरो. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. अनसर्टेनिटी एंड हो जाती है आपकी. एंड कैसा होता है कि बीच में एटमा भी है. ओके, वी आर फॉरगेटिंग दैट. एटमा भी आप दे सकते हो. 85% है तो उसमें लाना बहुत इजी है. व्हाई नॉट?
वो उसका स्कोर अपलोड कर लो, आपका एडमिशन ऑफर लेटर बन जाएगा मार्च में ही। मेक सेंस ना? अच्छा सर, अब Why अभी we मेरा have एक to लास्ट wait till क्वेश्चन May? है। माइका में भी यही चीज होता है कि आई डोंट नो माइका में भी क्या हो रहा है, आई डोंट नो। पहले ऐसा होता था कि आई डोंट नो नेम द कॉलेज, मैंने माइका का नाम नहीं लिया। तो ऐसा है क्या आपका फेज 1 में जो सीटें बचेंगी वो फेज 2 में जाएंगी, ऐसा कुछ है कि वो अलग है दोनों? Absolutely नहीं, नहीं, ये अलग है phases. There is no percentage assigned to any phase. And this is a very good question, Raf. And I appreciate this question because बहुत सारे students को ये question होता है कि अरे phase 1 में सारी सीटें जाएंगी, तो हम phase 2 रखते ही क्यों? अगर हमको सीटें भरनी होती तो फिर see, because it's an administrative hustle to do any phase. It's a lot of back-end work which goes. Okay. So why will want to invest our time, energy, manpower to conduct a phase 2 if there were no seats? Okay. Of course there are no seats. So percentage wise, I cannot give you कि कितने percent seat होते, but definitely there are a whole lot of seats which also in phase 2. But advantage is in phase 1 for sure. Okay. Phase 1 में apply करो so that आपका see आप you don't apply to only one college, right? You apply to 2-3 colleges. So you have to take a decision. So what is important for you? If the college tells you whether you're selected or not early, na? करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। फेज 1 में आपको मैं मार्च में बता रहा हूँ या अप्रैल फर्स्ट वीक में बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। करेक्ट। Okay. Then you can choose whether to join this or over others or not. That is completely up to you. वरना अगर आप फॉर्म भर के भी फायदा नहीं है कुछ, राइट? हाँ, फायदा नहीं है ना, फिर आपको फेज 2 का फॉर्म भर के आपको जून तक रिजल्ट का वेट ही करना है। You cannot do anything about it. करेक्ट। एंड एनीवे द ओनली ट्रबल इज कि मेरे हाथ में स्कोर नहीं है, कैट वाला का स्कोर है लेकिन सीमेट और दैट वाला का स्कोर नहीं है। बट एनीवे अगर तुम्हारा 80% टाइम नहीं आया तो फिर वैसे भी तुम्हारी कॉल नहीं आने वाला, फेज 2 में भी कॉल नहीं आने वाला। Clear. So let's slow down this and then let me just make this very simple to understand. अगर आपका स्कोर है डेफिनेटली अप्लाई, नो क्वेश्चंस अबाउट। अगर आपका स्कोर नहीं है, व्हाट यू वांट टू डू? ओके, ए इज ऑब्वियसली वेट फॉर द एग्जाम्स। ओके, या तो सेकंड थिंग आपका प्रोफाइल अच्छा मतलब 666 फर्स्ट क्लास थ्रू आउट अप्लाई कीजिए, बात खत्म होगा। इसमें क्या होगा कि एटमा का स्कोर आप दे सकते हो एंड यू कैन एंड इट बाय मार्च अप्रैल इटसेल्फ। करेक्ट। because this CMAT is now question mark, okay, and we don't know when it is going to be held, so most probably maybe in March. तो वो भी सिनेरियो आप देखिए ना, मार्च में एग्जाम होगा तो वो अप्रैल में ही रिजल्ट आएगा, उसका 10-15 दिन तो लगेगा। ओके, सो 15 दिन भी पकड़ो तो भी 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा, तो कॉलेज भी एटलीस्ट 1 वीक लेगा रिजल्ट प्रोसेस करने में। सो योर इंटरव्यूज विल हैपन सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल। ओके, सो योर maybe mid May or maybe first week of June your results will come. तो आपको वेट कर सकते हैं क्या आप तब तक? It's completely up to you, your decision. Great. Thank you, sir. Thank you very much for coming and talking to us. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Rav. It's lovely being with you as always.